Okay, students, so our next topic is AC through LCR series circuit. So here we have connected inductor, capacitor and resistor in series and with a AC source of voltage V0 sin omega t. नाउ बिफोर मूविंग अहेड कुछ जो पहले हमने फार्मूलाज कर दी थी उसको देख लेते हैं एक बार कि इन केस ऑफ resistor here as we can see कि बिकॉज ये तीनों सीरीज में हमें पता है कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है सो वी गेट अ वोल्टेज VL over here and voltage across the capacitor, let us call it VC. In the voltage across the resistor we call it VR. Then we also know that their maximum voltage will be given by, let us say, VOL for inductor, that would be I naught into XL. Then for capacitor maximum voltage will be VOC will be equal to I naught XC, and for resistor it will be VOR is equals to I naught into R. Here XL, as you know, is called the inductive reactance and its value is omega L, whereas XC is called the capacitive reactance and its value is 1 upon omega C, and R is the resistance over here, which you all very well know. Now let us write down the equation. Over here this voltage is divided among these three, so we can say that then VL plus VC plus VR will then be equal to V, and so we can then write instead of VL we can write di by dt, LDI by dt, and VC will be equal to Q by C. Individually all these we have done already. Now we are just connecting them in series, and then VR is IR whereas V is V naught sin omega t. So this is an equation, we can convert it into a differential equation, and then we can find the value of I. Now the value of current which we are going to find over here mathematically will be I is equals to I naught sin omega t plus phi. So we are not going into the detailed mathematics of this. So the answer for this will be I is equals to I naught sin omega t plus phi. Now let us try to study it in detail by using a phasor diagram. So let us draw a phasor diagram for this LCR series circuit. So how would that phasor diagram look like? Now we are going to use the maximum values over here. Now first let us draw the voltage across the resistor. Let us say it's this is the phasor for the voltage, and the maximum value is VOR or V naught R. Now as you know that the current and the voltage they are in same phase. जब भी हम बात करते हैं resistor की तो वो दोनों same phase में होते हैं, और क्योंकि वो दोनों सेम फेज में होते हैं so we can say that the maximum current over here I naught will be exactly along the same phase with the VOR. Now अब I naught हमें पता चल गया यहाँ पर है. Now we can talk about VL. So इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है. तो करंट अगर यहाँ पर है सो क्लियरली वोल्टेज 90 डिग्री से लीड करना चाहिए, फेज 90 से लीड करना चाहिए. सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडक्टर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VOL. एंड सिमिलरली नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कैपेसिटर, तो
तो कैपेसिटर में करंट लीड्स, तो करंट लीड करता है, सो वी विल ड्रॉ इट डाउन ओवर हियर, क्योंकि करंट लीड्स बाय अ फेज ऑफ π/2, तो वोल्टेज उसके पीछे आना चाहिए. सो दिस इज आवर VOC. नाउ अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखनी है वो ये है कि हमने इस पर्टिकुलर केस में वी हैव टेकन XL greater than XC. So when we take XL greater than XC, then we will have VOL greater than VOC. So then in that case एक और बात यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कि ये जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है फेजर में, दे आर एग्जैक्टली इन द सेम लाइन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो इन दो फेजर्स को हम एक सिंगल फेजर से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में. So finally let us say after subtracting I get this answer, and because VOL is greater I'll get it over here up. So ये होगा हमारा V0L minus V0C, that will be the value. Now if you want to find out the resultant, तो phasors are also rotating vectors, so vector की तरह हम उसको अगर treat करें तो हमें उसका resultant यहाँ मिलेगा. So this is the voltage across all three in series. ठीक है, तो ये हुआ resultant, this is our V0, and clearly you can see that there is an angle between the current I0 and the final voltage V0, and that angle is phi. And that is why we have got this answer, I is equals to I0 sin omega t plus phi. तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर है. अब हम आगे इसको और आगे सॉल्व करते हैं. सो वी नो नाउ कि ये जो पूरी वैल्यू है, इफ़ आई ड्रॉ इट ओवर हियर ओनली, सो दिस इज़ योर VOR and this particular is your VOL minus VOC. So if you want to find out the magnitude of VO, that means this phasor VO, तो ये एक Pythagoras दिख रहा है, right angle दिख रहा है, so we can easily use Pythagoras theorem over here, and so we can say that our VO square will be equal to VOR square plus VOL minus VOC the whole square. Now as we have already written over here at the top also कि VOL actually क्या है कि I0 XL, similarly VOC is I0 XC, and similarly VOR is I0 into R, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं. So this will be I0 square R squared plus इसकी जगह हम लिखेंगे I0 XL minus I0 XC whole square. So here अब हम लोग इसमें से I0 स्क्वायर सब में से बाहर निकाल सकते हैं. सो व्हाट वी गेट इनसाइड इज R स्क्वायर्ड प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर्ड. एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट V0 तो रूट लगाएंगे. सो दिस विल बी I0 इंटू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL minus XC the whole square. And so the value of the maximum current which we are going to get over here will be equal to V0 upon under root of R square plus XL minus XC the whole square. यहाँ जो डिनोमिनेटर में द थिंग विच वी गेट अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, लेट अस डिनोट इट बाय Z. सो व्हाट वी गेट ओवर हियर इज दैट I0 इज इक्वल्स टू V0 अपॉन Z. सो योर Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. इसे बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं इम्पिडेंस. ओके, अब उसकी यूनिट क्या होगी, दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि
और हियर इज आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई जेड, तो यहाँ वोल्टेज है तो यहाँ इसकी यूनिट जो है रेजिस्टेंस की यूनिट होनी चाहिए. सो इट्स यूनिट इज अगेन ओम्स ओनली. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द इम्पिडेंस. तो जब तीनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो ना आर आएगा, ना एक्सएल, ना एक्सी, तीनों साथ में इस तरीके से इम्पिडेंस बन के आएंगे. सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ. अब इसमें हम लोग इफ यू वांट वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एक्सएल. एक्सएल का जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ एक्सएल इज ओमेगा एल एंड एक्सी इज 1/ओमेगा सी. So we can just simplify this. So instead of XL I can write omega L, and instead of XC I can write 1/omega C the whole squared. So this will be the value of Z impedance.